इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं. संजय धोत्रे अटेंड इन कंसल्टेशन मीटिंग ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ E9 countries. Ministry of State for Education. Who is Sanjay Dhotरे? Sanjay Dhotरे. He is the Minister of State for Education. ठीक है. He is the Minister of State for Education. He attended the consulting meeting of education ministers of E9 countries. थीम है इसका E9 initiative, scaling up digital learning to accelerate progress towards sustainable development goals 4. ठीक है. E9 initiative, scaling up digital learning to accelerate progress towards sustainable development goal 4. E9 initiative, scaling up digital learning to accelerate progress towards sustainable development goal 4. तो ये डिजिटल लर्निंग स्किल्स को और जितने मार्जिनलाइज यूथ एंड चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, उनके लिए ये मीटिंग रखी गई थी. इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 का जो एजेंडा है उसको फोकस करते हुए, ठीक है, जो 5 प्रायोरिटीज़ हैं उसमें से जो 3 हैं, by focusing on 3 of the 5 priority of the 2020 Global Education Meeting Declaration organized by UNESCO. इसमें टीचर्स को सपोर्ट करने के इस इनिशिएटिव का है ऑब्जेक्टिव, टीचर्स को सपोर्ट प्रदान किया जाए, जो स्किल्स है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए और डिजिटल डिवाइड जो है उन्हें नैरो किया जाए, नैरोइंग ऑफ द डिजिटल डिवाइड. ठीक है. E9 countries, it was launched in 1993. ओके, तो अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव्स पहला हो जाएगा, मेन है कि द E9 इनिशिएटिव जो है, जो E9 इनिशिएटिव है, इट इज़ टू एक्सीलरेट द recovery and advance the sustainable development goal agenda by focusing on 3 of the 5 priorities of 2020 global education meeting declaration organized by UNESCO. हो जाएगा सपोर्ट टू टीचर्स. दूसरा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स. तीसरा हो जाएगा नैरोइंग ऑफ द डिजिटल डिवाइड. E9 कंट्रीज के बारे में देखें. इट वाज लॉन्च्ड इन 1993 एट द EFA summit in New Delhi. 1993 at the EFA Summit in New Delhi, it was set up to achieve the goals of UNESCO Education for All initiative. This Education for All initiative by UNESCO
और 9 कंट्रीज कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ओके, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान. बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान. ठीक है. The 9 countries together represent almost 30% of world's nominal GDP. तो उन्होंने, संजय धोत्रे ने जो है अटेंड किया था कंसल्टिंग मीटिंग ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ E9 कंट्रीज. ये एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा 4 है उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव इसे पूरा करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव के तहत जो है डिजिटल लर्निंग को इंक्रीज़ करना, खासकर जितने भी मार्जिनलाइज चिल्ड्रन और यूथ है, खासकर लड़कियों के लिए डिजिटल लर्निंग को और फैलाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना. इसका मेन एम है टीचर्स को सपोर्ट करना, इन्वेस्टमेंट करना स्किल्स में, नैरोइंग ऑफ द डिजिटल डिवाइड. ठीक है. नाउ यूनेस्को के बारे में जान लें कि यूनेस्को जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे अज़ौले और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इन ऑद्रे अज़ौले, पेरिस, फ्रांस, यूनेस्को. Environment Minister Prakash Javadekar participated in Climate and Development Ministerial Meet in run-up to COP26. Prakash Javadekar is Environment Minister है. ओके. उन्होंने वो पार्टिसिपेट किए हैं इन क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रियल मीट. So he participated in virtual climate and development ministerial meet hosted by United Kingdom. In a run-up to the 26th United Nations Climate Change Conference of 26th Conference of Parties 2021. Okay. The event was hosted by COP26 President Alok Sharma. Who is the president of COP26? Alok Sharma. And UK Foreign Secretary Dominic Raab. He is UK Foreign Secretary with a focus on how to set international agenda in the run-up to COP26 2021. So COP26 कॉन्फ्रेंस जो है वो स्कॉटिश इवेंट कैंपस ग्लासगो में होने वाला है. ओके. इटली भी पार्टनर रहेगा यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में, यूनाइटेड नेशन इन पार्टनरशिप विद इटली. ओके. इट विल बी हेल्ड इन ग्लासगो में होने वाला. यूनाइटेड किंगडम इन पार्टनरशिप विद इटली के साथ प्लस यूनाइटेड किंगडम. Banking and finance. Banking and finance. The base rate of NBFC MFI's borrowing of quarter one financial was 7.81%. RBI ने डिटेक्ट किया है. RBI ने कहा है what
7.81% applicable base rate to be charged for the loans that are borrowed from NBFC and microfinance institution for first quarter of financial year 2022. कितना बेस रेट लेना चाहिए? इतना लेना RBI ने इन्फॉर्म किया है कि आपको इतना बेस रेट लेना है 7.81%. अगर आप बोरो कर रहे हो NBFC और MFI से तो लोन्स पे कितना परसेंट रेट होगा? 7.81% बेस रेट लगेगा फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022. Okay, and it has been lowered the base rate has been lowered by 15 basis points. क्योंकि जो फोर्थ क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2021 उसमें 8.76% और अब जो है वो बता रहा है 7.81%. This is the current base rate. Okay, so it has been lowered by 15 basis points. What is base rate? Base rate is actually the minimum interest rate. It is the minimum interest rate set by RBI below which Indian banks are not permitted to lend to their customers. Minimum interest rate set by RBI below which the Indian banks are not permitted, they can't lend to their customer. It was introduced in June 2010. About NBFC MFIs, it is non-banking financial corporations. NBFC is non-banking financial corporation and is microfinance institution are the non-deposit taking financial companies which will be getting NBFC status from RBI and registered under the Companies Act 2013. The conditions to qualify for NBFC MFI. To register as an NBFC, the MFI needs to have a minimum net owned fund of so those microfinance institution having a minimum net owned funds of rupees 5 crore. Okay, second is for northeast region 2 crore is required net own fund, and 85% of its net assets should be like qualifying assets. Okay, the qualifying assets are those assets that have a substantial period to be ready for their intended use or sale. 85% net assets should be qualifying asset. Then that MFI will be regarded as the NBFC MFI, and these microfinance institutions, they are registered under the Companies Act 2013.
SEBI modified its framework for asset management companies' contribution to set up LPCC, Limited Purpose Clearing Corporation. SEBI modified its framework relating to guidelines on contribution to set up LPCC, which is Limited Purpose Clearing by asset management companies of mutual funds. So SEBI modified its framework relating to the guidelines on contribution to the Limited Purpose Clearing Corporation by asset management companies of mutual funds. In February 2020, SEBI has issued certain guidelines as requirement for the contribution of February 2020, SEBI has issued certain guidelines such as requirement of the contribution of rupees 150 crores as share capital from AMCs for setting up of LPCC by mutual funds. Okay. So फरवरी 2021 में सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे कि there will be a requirement for the contribution of rupees 150 crore as share capital from asset management companies for setting up of LPCC by mutual funds. तो उसी फ्रेमवर्क में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है. It also prescribed that contribution of AMC has to be in proportion to the asset under management of open-ended debt-oriented mutual fund schemes, excluding overnight gilt fund and gilt fund with 10-year constant duration, but including conservative hybrid schemes managed by them for financial year 2020. SEBI now has modified one of the guidelines such as the proportion to asset under management, in which the contribution of asset management companies now will be based on average asset under management of debt-oriented schemes managed by them for the financial year 2021. SEBI के चेयरमैन है अजय त्यागी and its headquarters is in Mumbai. It was established in 12 April 1992 by SEBI Act 12 April 1992 under SEBI Act 1992.